Visible? Yes, yes. Yeah, Chart visible? yes, chart visible. Okay, perfect. ठीक है, Nifty. तो first we will see for Nifty. ठीक है, फिर बैंक निफ्टी देखते हैं because Nifty was the weaker one today. So quickly we follow the rituals first. ठीक है, understand why I mark this level is because see, I got this question and I want to reply in this VC2. देखिए, technically the question was that in the previous VC also one subscriber asked me and texted me that why you draw manual levels. Okay, see manual levels ना आपके ध्यान में रहते हैं. What you draw, what you see, okay, it's just like you're writing something and you're remembering it rather than seeing and forgetting it, because it's the whole base on which you will work in the market. ठीक है, indices के levels आपको कोई रात को 12 बजे थप्पड़ मार के भी पूछे ना तो भी आपको याद होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज इफ यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस नाउ इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. ठीक है, आपको काम आएगा ये चीज, ट्रस्ट मी. सो एटलीस्ट इंडेक्स के तो आप मैन्युअली मार्क किया कीजिए. बाकी हाँ, इंडिकेटर्स है टू सॉर्ट योर लाइफ आउट. लाइक स्टॉक्स के लिए आप डायरेक्टली इंडिकेटर्स लगाएं, कर लीजिए, बट उसमें भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. तो व्हाई नॉट जस्ट वीकली, मंथली में आपको टाइम नहीं लगेगा. मंथली हार्डली इट टेक्स अराउंड 5-10 मिनट्स. ठीक है, एंड वो पूरे 30-20 दिन आपको काम आ सकता है. सिमिलरली फॉर वीक पूरे 5 दिन काम आ सकता है. डेली के लिए ठीक है, डेली के लिए तो यू कैन जस्ट रिमेम्बर. आप जब प्रैक्टिस शुरू कर देंगे आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको ऐसे ही पता पड़ जाएगा व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव ईयर. सो सी फॉर दिस थिंग, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, आपको इंडिकेटर से पता पड़ जाता है. ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे. बट व्हाट आई विल मार्क हियर इज दिस पर्टिकुलर बॉटम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्लस अगर आपने देखा है तो इधर हमारा एक गैप जोन भी बचा हुआ है. ठीक है, जस्ट अ मिनट, हैव अ लुक हियर. ठीक है, वी सर्टेनली हैव अ गैप जोन हियर. 5 मिनट्स पे बेटर था ये. Just a minute. Yeah, have a look here. 5 minutes पे if you see this thing here, 16.824. It's a swing low if I'm not wrong. ठीक है, ये आपका swing low है. Uncertainly, if I just put this thing here, is it touched? No. So see, generally 880 पे आपका एक सपोर्ट मिल सकता है आपको. ठीक है, कल भी अगर इन केस मार्केट गैप डाउन होता है तो, अगर गैप अप ओपन होता है देन द थिंग इज डिफरेंट. ओके, बट लेट्स चेक इट विद द पिवट्स नाउ. जैसे कि आपको अगर मार्क करना है तो ओके, just mark some levels here. Let's switch quickly go on to weekly charts first to mark the previous week high, previous week low, so that we remember what is actually happening out. ठीक है, so see, this is previous week high, this is previous week low. ठीक है, what is the price range here? 16,800 से लेके आपका 17,400, 600 पॉइंट्स का प्राइस रेंज है. 600-700 पॉइंट्स. ठीक है, and what else? मंथली देख लेते हैं. सो वन इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल हियर कि अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मंथली तो अभी भी डेवलपिंग है. सो ये भी आप अभी के लिए तो ठीक है, ये रेंज काम नहीं रहेगा. नो इश्यूज विद दिस. So let's switch on to like daily and just let's get checked with if there is something on daily too, like a 2-day pattern or see. Look, so as I was saying, ठीक है, हम एक कंप्रेशन में जा रहे हैं. अगर आपने वीकली पे देखा होगा वी वर लाइक इन इनसाइड कैंडल रेंज. ठीक है, सिमिलर फॉर दिस थिंग टू. अगर आप देखेंगे ये एक रेंज में चल रहा है. इसको अगर और नैरो डाउन करना है तो वी हैव अ फर्दर कंप्रेशन. ये देखिए, राइट. सो टेक्निकली वी आर इन अ प्राइस रेंज ऑफ 16,830 820 से लेके 17,270. ठीक है, तो कल अगर मार्केट ऊपर भी जाता है फॉर एनी
like say reasons, then this can be eventually one level which you have to watch it out for. Okay. So I just marked these levels for you just so that you just remember. But now we'll directly jump into our trades. Please switch off your mics or turn off your mic. ठीक है, डायरेक्टली अब हम CPR पे चलते हैं. अरे यार ये स्क्रिप्ट दिस इज ऑफ. ठीक है, 15 मिनट पे चले जाते हैं. Okay, so see, this is much more informed now. If you see this thing, bad. This looks good now. Okay, और CPR का भी थोड़ा बढ़ा देते हैं. Next CPR. Let's turn this thing black. Okay. So see, what we have here is we have a sort of narrow CPR, of course. ठीक है, तो अगर narrow CPR है, definitely देखिए, कल अगर आपको opening somewhere around you see, आज का ये लेवल था which was not able to take out. 17,000 ये लेवल था जो आज sellers face buyers were not able to like take out. ठीक है, this was a particular area what we were seeing. अगर एक चीज और देखनी है तो let's check out for pivot money zones too. ठीक है, money zones पे एक बार देख लेते हैं just to give a clear view. So ये देखिए, इसका ऑप्शन जो है अभी भी POCs का ऊपर है. डेवलपिंग आप देखेंगे, डेवलपिंग POCs का किधर है? डेवलपिंग POCs somewhere here. Have a look at H3 and yeah, H3 के लगभग है. इसका वैल्यू एरिया हाई किधर है? On its previous day high. So definitely अगर कल हम गैप अप ओपन होते हैं in between this particular range, ठीक है, we can come for a pullback till CPR and we can just go up again. ठीक है, फॉल होने के चांसेस अभी कम है क्योंकि ऑक्शन हो सकता है कि ऑक्शन एक हायर साइड पे हो जाए. इधर एक प्रीवियस स्विंग लो भी है. ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग लो है, ऑलमोस्ट गैप भी ऑलमोस्ट फिल कर चुका है. एंड इफ यू सी द स्ट्रक्चर आल्सो इज शोइंग यू अ रैली बेस रैली. So mostly buyers turned up in the last hour of the market is what I am guessing it out to be. ठीक है, so market can just respect the CPR और at least हमारे पास ये तो होगा कि ये एक रिवर्सल जोन है जहाँ पे हम आए कर सकते हैं. Okay, as I said today also, so tomorrow also this particular zone can act as a good support zone too. अगर market gap down भी होता है तो इधर से एक pull back आ सकता है towards CPR. Okay, and then again we can go down. That is subjective, but what I am thinking is opening print पे depend करेगा where we are opening. ठीक है, opening print can give you a good idea. So definitely आप एक बात याद रखिए, अगर प्राइस इससे ऊपर जाएगा then definitely we have chances to touch the virgin CPR first and even we can go for a gap fill here. ठीक है, towards the same regions was what I was eyeing for. ठीक है, 1780 से लेके 130 के जोन्स में हम जा सकते हैं. उसके बाद से वापस हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, बट दैट इज अगेन सब्जेक्टिव एज वी आर टॉकिंग अबाउट EOD. We will just see how the opening print turn out to be. Now, one important information here is, see, what is happening? As we discussed, weekly CPR का ट्रेंड नीचे आ रहा था. देखिए अब weekly CPR किधर है? इधर है. ठीक है, now if you see करंट जो इसका वीकली CPR है वो इधर एक रेजिस्टेंस की तरह है. दैट इज अराउंड 120 से लेके कितना है? 150. वही जो हमारे जोन्स थे फॉर गैप फिलिंग टू. सो हियर इफ यू सी डेली जो CPRs है, इधर से इसने अपना ट्रेंड चेंज करना शुरू किया था. ठीक है, असेंडिंग 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 था, बट इट टुक रेजिस्टेंस, केम डाउन. ठीक है, इफ यू रिमेंबर वी हैड सेल ऑन राइज व्यू हियर. ओके, सेम गैप डाउन. अभी इधर क्या हो रहा है? इधर एक नैरो CPR आ रहा है प्लस एक बॉटम भी दिख रहा है आपको. सो चांसेस आर
और प्राइस क्लोज भी जो है वो डेवलपिंग सीपीआर के ऊपर ही हुआ है. सो हायर चांसेस आर कि अगर ये पर्टिकुलर 16 1950 से लेके 16,900 से लेके 16 19 15 का जोन इंटैक्ट रहता है कल भी ओपनिंग पे. सो हायर चांसेस आर दैट मार्केट कैन ऑप्शन हायर फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल. ठीक है. और एल्स सपोर्ट तो इधर इनिशियल सपोर्ट तो है ही 820 825 से लेके 860 के बीच एक इनिशियल सपोर्ट मिलेगा. ठीक है. फॉर पुल बैक एंड अगेन डाउन. अगर इसको ब्रेक भी करना है तो अगेन डाउन से ऐसे ब्रेक कर सकता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. सी बैंक निफ्टी ऑल्सो सिमिलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है. बैंक निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी. इफ यू सी ये देखिए आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यू सी a weekly CPR that is in pink and a daily CPR. Two strong resistance here. Okay, so it is very very important if we have to dominate things out. Just a minute. इसको छोड़ो. Okay. Okay. So if we have to dominate things out, if you just see this thing here, it's an outside kind of camerilla setup also. ठीक है. And a lower camerilla. So higher chances are कि अगर हम कल gap down में खुलते हैं तो इधर से एक initial support मिलेगा आपको. ठीक है. Initial support, a pullback towards POC or towards a CPR, and again we can just break in case of there is some further weakness in the market. But if you are opening like gap up above H3, then we will just certainly wait for the POCs or value area high to show up. ठीक है. Definitely you can see 36,200 is a resistance as of now. कल भी था. ठीक है. Support turnout resistance. If you see this thing. ठीक है. So if we take out 36,200 successfully, then first area would be this particular POC, and then we can auction higher for this POC too. Okay, but certainly weekly अभी के लिए हम इसको मतलब ultimate target मान के चलते हैं. We might just take a U-turn from here too. ठीक है. Remember this thing because we have Fed meeting coming up in May. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका हो सकता है प्राइस हाइक हो तो बैंक निफ्टी कैन कंप्लीट द साइकिल. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीसी में यूट्यूब में. ये देखिए इसका मंथली सीपीआर भी नीचे है. वी आर जस्ट रिवर्सिंग इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. अगर आप देखेंगे सीपीआर ट्रेंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिवर्स हो रहा है. हायर में अभी तक हम नहीं रिवर्स हुए. कीप दैट थिंग इन माइंड. सो डोंट मेक अग्रेसिव लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी. जस्ट स्कैल्प फॉर लॉन्ग्स. ये देखिए you have just touched monthly CPR. वीकली में अगर आपको याद है तो वीकली में कितने पॉइंट्स का फॉल है यू कैन कैलकुलेट. ऑलमोस्ट जो प्रीवियस वीसी मैंने बात किया था दैट्स फॉल ऑफ अराउंड मोर देन 1,000 पॉइंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1,000 to 1,200 पॉइंट्स. ठीक है. ये देखिए exactly we auction you out here and then again access comes up. Just wait for the monthly CPR to just show up. Yes. See, here is some noise. I will just delete this noise. So क्या हो गया. Okay. So see, it's gone. ठीक है. I'll just switch this thing off to for particular time. So देखिए कल मार्केट हमें दिख रहा है that we have narrow CPRs for tomorrow. Okay, but we'll check it, cross verify it with pivot with 2. तो देखिए इधर नीचे साइड में भी you don't see anything which is like left out as a virgin CPR. ठीक है. इधर भी अगर आप देखें तो आपको virgin CPRs कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं. But definitely if you option lower we can just see this particular virgin CPR to get filled here on the lower side too. ठीक है. हमारे पास एक weekly CPR है to get filled.
if you see this thing here. ठीक है, but before that we have to break this monthly pivot. So on broader trend अभी हम एक pullback में हैं, ठीक है, rather than long we are in a pullback. So don't go aggressive long in Bank Nifty unless and until we change the trend on a weekly basis as well. आपने देखा होगा we caught this thing here, ठीक है, from here till here, and still we can go down. Chances are higher. So keep that thing in mind. Unless and until we reverse for a broader trend, do not try to take a broader entry or aggressive long in Bank Nifty. ठीक है, बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट आएंगे शायद कल, if I'm not wrong, 26th. Yes, कल आएंगे. So that also depends how are they turning up, and within the same week we also have Axis Bank का result too. So keep this thing in mind. हाँ, अगर बैंक निफ्टी आपको इधर से स्ट्रेंथ दिखाता है, लेट्स से सपोज 36,500 550 के ऊपर जाता है ये, ओके, 36,550 या 600 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर पा रहा है, देन ऑल्सो इफ यू सी अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ये देखिए एक सेल जोन खड़ा है इधर, ओके, वी हैव टू क्लियर दिस सेल जोन फर्स्ट, देन वी कैन ऑप्शन हायर फॉर दिस गैप फिल टू, बट दैट्स सब्जेक्टिव, ओके. ये अगर आप देखेंगे तो आपका ये ऑलमोस्ट, दिस इज ऑल्सो क्रूशियल लेवल, ये देखिए, just let me mark this thing with a line or something like that. Have a look. Ultimately this is your resistance on a higher side, ठीक है. अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 days का हाई आपका रेजिस्टेंस होगा. आप देखिए इधर क्या हुआ, ठीक है, एंड सिमिलरली दिस थिंग विल एक्ट एज अ सपोर्ट इफ यू सी, ठीक है. तो अगेन इफ यू सी थिंग्स आर लाइक दैट ओनली, जो इधर हो रहा था वो सिमिलर अब इधर ही हो रहा है. आर यू गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग? 1000 पॉइंट का रेंज है, ठीक है, इधर ये रेंज छोटा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 37 फ्रॉम हियर 37,340 से लेके, या the range was smaller here, the range has turned out to be big here. So that is how we will just see. इधर ये lower band है हमारे पास अभी, ठीक है. So unless and until we break this thing, we can just look out for scalping longs, ठीक है, till the upper band here, ठीक है. upper band तक हम chances है जा सकते हैं, but this is the main issue here as of now, ठीक है. यही आपका मेन इशू होगा इधर 36,550 से लेके 36,000. दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ फोकस हियर. इधर से अगर कहीं रिवर्सल आपको बैंक निफ्टी में दिखता है एंड निफ्टी भी अगर वीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, निफ्टी भी सिमिलर इस पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है. अगर निफ्टी भी वीक है वही सेम प्राइस जोन से जैसे कि आज भी हुआ था, like suppose from here, then chances are they might fall aggressively, ठीक है. दोनों इंडाइसेस फॉल करेंगे aggressively towards new swing lows. ठीक है, निफ्टी में भी सेम similar kind of action is happening. 1 2 3 4 5 6. Are you getting why structures are important? मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी भी दिखाया, मैंने निफ्टी भी दिखाया. Similar type of price action is happening, but Nifty was slightly, you can say, ahead of Bank Nifty, but now both are looking balanced. So we have to just see who takes the leadership from here. So Nifty भी अगर आप देखें तो it has the potential to go till the upper band, that is 17,275. That is why I said in the starting, while I was discussing about this EOD thing, that don't go into aggressive longs, just go into scalping longs. अगर हम जा रहे हैं तो pull back भी हो सकता है technically, ठीक है. Until and unless we change the weekly trend, we will not switch on to swing longs, ठीक है. That is the ultimate caution you have to keep in mind here. So this is slight EOD. अभी इसमें मैंने फ्लोर पिवट्स और बाकी सब ऐड नहीं किया, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर एवरीवन, करेक्ट. उसका चार्ट चाहिए तो मैं कल सुबह डाल दूंगा, नो इश्यूज. ओपनिंग प्रिंट जहां पे भी आएगा मैं उसका चार्ट आपको डाल ही देता हूँ या व्यू आपको बता ही देते हैं, ठीक है. सो हैव योर फोकस देयर. सी बोथ, इफ यू सी लास्ट टाइम आपको बाइंग दिखी है,
ठीक है, नीचे से आपको एक बाइंग दिखी है सक्सेसिव। अगर आप इधर देखिए प्राइस स्ट्रक्चर से भी, कैंडल आया अगेन इनगल्फ हो गया, कैंडल आया अगेन इनगल्फ हो गया, ये कैंडल ने हाई भी तोड़ा है और ऊपर भी गया है। तो सर्टेनली सम आर बायर्स हियर, someone has bought this thing here. ठीक है, so market can auction higher is what I think in both the indices. कल Nifty might be stronger, Bank Nifty can be subdued. Okay, so look out for specifically जो आज beaten down stocks है वो थोड़ा सा recover करने की कोशिश कर सकते हैं कल. So have that thing in mind. Okay, Bank Nifty का आप देखिए पहले POC पे बैलेंस हो सकता है, slightly auction higher. इसका मैक्स रेंज यही है जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैक्स रेंज इसका और 400 300 400 500 पॉइंट हो सकता है मैक्स टू मैक्स ईयर। ठीक है, एंड द फर्दर लीड विल बी कमिंग फ्रॉम निफ्टी इज व्हाट आई फील। सो कीप अ चेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एन ईओडी बेसिस। बाकी तो ओपनिंग ट्रेंड जैसा होगा आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। If it goes down, where it can likely to take support somewhere around 35,000 level. See, I don't think this is going down tomorrow. Okay. ठीक है, but if it goes down, then also we can analyze this thing. ठीक है, let us check out for weekly umbrellas once. So see, you just have my labels on कर दो just for clear understanding. ठीक है, sorry for this indicator, this is not my setup, but let it be. अब मैं सब दिख रहा है, I generally do not use this kind of setups, but just to show you, देखिए इसका L3 इधर है, we already retraced from L3, so higher chances are we can attain a equilibrium at around वीकली H3 से लेके पिवट भी उसका इधर ही है एंड POC भी इधर ही है, तो मोस्टली हम इक्विलिब्रियम इधर आ सकते हैं। ओके, एंड दिस कैन डिसाइड द फर्दर अप मूव ऑफ अराउंड 200-250 पॉइंट्स ऑन अपर साइड। ठीक है, आप देख रहे हैं कि H4 इधर है, ब्रेकआउट लेवल, दैट इज एज वी टॉक्ड अबाउट। सो अनलेस एंड अंटिल वी, फर्स्टली दिस इज द चैलेंज हियर, वी हैव टू ब्रेक दिस थिंग, ये तो बात की बात है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द चैलेंज, वी हैव टू टेक दिस थिंग आउट। This is the previous 2-day high in Bank Nifty. अगर आप देख रहे हैं 2-day का high है, so ultimately we can come till here. Yes. जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, this is similar pattern which is being formed up here only. ये देखिए। That 6-day whatever formed earlier. हाँ जी, similar things. Yes. Similar pattern can be seen here too. ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है। अगर इधर से पैटर्न चेंज होता है then we might just think of going positional, not positional, short swings, okay, but then to बहुत सारे शॉर्टर्स है इधर। देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले वीसी में बताया था, ये पूरा एक्सेस है, ये जो पूरा प्राइस हुआ है ना, ये HDFC ट्विंस की वजह से हुआ है, मार्केट में जो एक्सेस आया इधर से बैलेंस हुआ है। From there the buying may come, buying will come. Exactly. So yes, so this is particularly a seller zone. Sellers top पे बैठे हैं मोस्टली, और रोल ओवर्स भी शॉर्ट ही हो रहे हैं, so mostly upper side is capped as of now. Correct. हाँ, what I am telling is we might go up, but that can be a pullback. So don't go positional or swing longs. Go scalping longs, or you can just play intraday longs, okay? But don't take anything. Yes. सिमिलरली निफ्टी में भी देखना चाहेंगे, निफ्टी में भी दिखा देते हैं वीकली लेवल्स। One of the earlier VC you were telling that you will be using the candle levels only for daily intradays, but now you have shown to the weekly levels also. That is because someone asked me that what if it goes down, so इसलिए मैंने वीकली कैमरा ऑन करके दिखाया आपको। Okay. Yeah. See, levels are levels. Like see here, if you see L3 पे, ठीक है, what if it goes down, so down के लिए भी आपको पहले ये ब्रेक करना होगा 840, उसके बाद भी आपका एक स्विंग लो नीचे खड़ा है, that is previous week low. So that is why I said I do not see downside as of now. I see a pullback. Okay. Yeah, ठीक है,
That is how I will justify my AOD analysis here. Very basic. मैंने ज़्यादा भी इतना कुछ तड़कता भड़कता ऐड नहीं किया इसमें, ठीक है. I can add much more factors into this too, but I just kept it light and short. ठीक है. एक बार जिसको I just got this query, so I am just showing you this thing. एक बार इसको पेमा से भी दिखा देता हूँ, because this was a query of many people on my DMs. I just remembered it now. जिसको पेमा से भी देखना होगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं पेमा से भी. How is PEMA reacting to this particular thing? So this is high intensity PEMA band, ठीक है. This is 8, 13, 21. So अगर आप PEMA पे भी देखेंगे तो we are at least going under pullback. But if you check it on a low intensity, which is less volatile, then let me change this to 21, 34, 55. This is standard. ये आपको बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है. ये कुछ अलग से मैंने वैल्यूज नहीं डाल दिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज है. Look, दिख गया. We're in a pullback. With PEMA 2, I just showed you this. So we can pull back till here, जैसे कि हमने देखा था. Pull back till here. Okay. Then again we can just go down. So this is the area which we can just look out for. Similarly for Bank Nifty 2. Why is this trading view so slow? Look, ये तो already pullback दे ही रहा है. Okay. So let me just check this with the high intensity PEMA band. Okay. PEMA. See, mid intensity में every pullback is getting sold. If you see, look at this thing here. ठीक है. हर pullback जो है आपका sell out किया जा रहा है. Let's check it on a high intensity time frame. High intensity PEMA band. Sorry. So देखिए, short term already we are. Bank Nifty looks much stronger, is what we see, right? तो निफ्टी को पुल बैक में मदद कर सकता है, राइट. इसने इधर भी आपका एक पुल बैक के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, तो बैंक निफ्टी मोस्टली कैन सी अपसाइड. ओके. लेवल्स भी हमने देख लिए. सो मोस्टली टिल ईयर इधर से फर्दर हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द फैक्टर्स फॉर्मिंग अप. गॉट इट गाइस? Okay, my battery is also low now, so I think we can just